Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture a new hire, right fresh out of college, and they're sitting entirely alone in their living room. Yeah, just the glow of the laptop screen lighting up the space. Exactly. And they have just hit send on a highly critical email. But within a fraction of a second, their stomach just completely drops. Oh no. We all know that feeling. Right. They realize they just sent the wrong attachment. Maybe it's financially sensitive, or maybe it's just glaringly, embarrassingly incorrect, and it went to the entire client list. That is a nightmare scenario. It really is. Now, if they were sitting in a physical office right now, the solution would be immediate, right? They could literally just stand up, peek over their cubicle, and grab a seasoned colleague by the arm. Yeah, they just whisper, how do I recall this? What do I say? Exactly. And the veteran probably just laugh, hit a few keystrokes, and the disaster is averted in 10 seconds flat. But at home, it's a completely different story. that same new hire is just completely paralyzed. They're staring at a blinking cursor, their heart is pounding, and they're waiting for a Slack response that honestly might take an hour. Or it might not come until after lunch, Right. And this inevitable barrier, this exact agonizing moment of isolation, it isn't just a tough day at work. It is fundamentally rewiring the global job market as we speak. It really is. It's the hidden structural reason why securing a remote job has suddenly, almost invisibly, become drastically harder than landing in an in-person one. Which is wild to think about. It truly is a profound shift in the architecture of human labor. I mean, that physical distance, that isolation you just described, it doesn't merely change the geography of where the laptop sits. No, not at all. It deeply alters the psychology of the employer, right? Right. And the nature of trust. And consequently, the very barrier to entry for anyone trying to earn a living in this new economy. That invisible barrier is exactly what we are unpacking today. We are exploring a truly fascinating, rigorously peer-reviewed article. And it was just published in 2026, right? Yeah. Yes, in the highly prestigious Administrative Science Quarterly, which is an FT50 listed journal. A fantastic publication. It really is. The paper is titled Remote Work and Hiring Requirements, Cross-Country Evidence from Job Postings. It's authored by Shinan Wang and Letian Zhang from Northwestern University, alongside Zhenyu Liao from Northeastern University. An incredible team of researchers. Absolutely. But before we get into the mechanisms of this research, I do want to take a moment to share something with you, the listener. Yeah, this is important. We've always valued the intimacy of this space. The quiet moments we spend together breaking down complex ideas. So, starting from March 2026, we have transitioned our schedule. We have. We are now bringing you these conversations every Sunday and Monday. There is a very deliberate rhythm to this new schedule, actually. Sundays are now reserved for classic paper or book reviews. Right, those foundational texts that have quietly shaped our understanding of the world for decades. Exactly. Meanwhile, our Monday shows, much like the one you are listening to right now, keep their focus strictly on the latest, most groundbreaking publications from top-tier peer-reviewed journals. And we owe you an enormous thank you for supporting this initiative because there is a vital, real-world reason behind this change. There really is. The technology that helps us bring this analysis to you, specifically the AI-assisted back-end operations, well, it requires massive data center infrastructure. And those centers are incredibly heavy on the natural world. They are, particularly regarding the considerable water intake required for their cooling systems. So by intentionally limiting our weekly release schedule to just 2 meticulously crafted discussions, we are actively giving back to climate change initiatives. It's our way of preserving the physical environment without losing a single drop of the intellectual richness in our conversations. Beautifully said. It is a delicate balance, preserving nature while expanding knowledge. And, speaking of the academic landscape that produces this knowledge, it is worth addressing the recent changes to the FT50 journal list for 2026. Yeah, for those entrenched in academia, these lists shift. It happens. It does. But we want to be incredibly clear here. The outgoing journals are still exceptionally prestigious. Absolutely. Their rigorous contribution to human understanding hasn't diminished in the slightest just because an index changed. Exactly. So, for the convenience of scholars navigating this space with us, we will be referring to them here as Emeritus FT listed journals.
which I think is just a proper way to honor their enduring legacy. I agree. And along those same lines, we also acknowledge the formal announcement that the deeply respected practitioner journal, MIT Sloan Management Review, will cease production in September 2026. It is genuinely hard to overstate its monumental contribution to the management research community over the last 6 decades. It really is. The cessation of its production absolutely does not erase that legacy. We will definitively continue featuring its brilliant articles in our Weekend Classics section whenever possible. Because our ethos has always been simple, right? We prioritize literature impact and absolute quality over any arbitrary index or list. Spot on. We adhere strictly to these principles as an open resource for the academic community, so thank you for trusting us with your time. And we truly urge you to make the space in your week to read the thoughtfully crafted article we are analyzing today. Yes, please do. The link is right there in the show notes. It is well worth your time. The authors have really managed to capture a massive societal shift in real time. So imagine you are just starting out. Maybe you're a young scholar beginning your research journey, or maybe you're just a professional trying to understand why your recent job hunt feels so excruciating. It feels brutal out there for a lot of people right now. It really does. So let's lay out the core mission of this paper without any of the academic jargon. For decades, economists have talked about something called skill upgrading. Right. Basically, when new technology comes along, like robots on an assembly line or software that automates accounting, it destroys the repetitive middle skill jobs. Exactly. And to survive in that new economy, workers suddenly need higher skills. We have known that for a long time. Yeah, technology changes what we do. But this paper asks a completely different question. It asks what happens when technology changes where we work. It is such a brilliant pivot. I mean, we have spent half a century analyzing how the content of a task changes when a machine intervenes. Right. But these researchers recognized a massive blind spot. We were completely ignoring the context of the task. The environment itself. Exactly. They suspected that moving the worker out of the office and into the living room would trigger its own unique wave of skill upgrading, totally independent of whatever software they were actually using. And their findings are staggering. I mean, by analyzing over 50 million job postings across Europe, they prove that the moment a job goes remote, employers suddenly start demanding significantly more skills. More years of prior experience, too. Yeah, and more formal education from the candidates. But, whenever I hear a number like 50 million, my brain kind of short circuits. It's an unfathomable amount of data. Right. How do researchers even begin to capture and analyze that volume of human behavior? Well, it requires an immense, highly sophisticated data infrastructure. The researchers tapped into a data set provided by a company called Lightcast. Okay, Lightcast, what do they do? So what Lightcast does is systematically scrape online job postings from thousands of job boards and corporate websites. And they did this across 28 European Union countries. Wow, 28 countries. And what was the time frame? They looked at a window spanning from 2018 to 2021. Just to give you a sense of the sheer scale here, this data set captures roughly 60% of all actual job vacancies across those entire nations during that period. That timeline is the key, though, isn't it? Yeah. 2018 to 2021. I mean, they captured the quiet before and the chaotic after of the most massive workplace disruption in modern history. Precisely. And the descriptive patterns alone tell a fascinating story. I bet. Yeah, before the pandemic, so from 2018 to early 2020, remote jobs were an anomaly. They hovered around a marginal 2 to 4% of all postings. Barely a blip on the radar. Right. But by March 2021, that number had surged past 12% across the board. That's a massive jump in such a short time. It is. And the geographic variations are striking, actually. You had a country like Germany where remote postings jumped from around 4% to an astonishing 19%. 19%, that's huge. But then meanwhile, a country like Sweden barely moved the needle, going from 0 to just 1%. Which totally makes sense given Sweden's famous resistance to strict lockdowns compared to Germany's approach, right? Exactly. Local policy drove a lot of that variance. But zooming out from those national differences, the overarching baseline finding of the paper is what really hit me. Across all these millions of postings, they found that remote jobs list roughly 25% more required skills than identical in-person roles. 25% more. Just think about that. It's wild. And they demand an extra 0.1 to 0.2 years of prior experience. And they require higher educational credentials. The paper notes this as 0.04 to 0.06 standard deviations higher.
Right, and I should probably clarify what that means in practical terms because standard deviations can sound a bit abstract when you're just listening to it. Please do. Yeah. Like, what does a 0.06 standard deviation actually look like to a human being applying for a job? Okay, so imagine lining up thousands of candidates based on their education. Okay, I'm picturing it. If an employer increases their requirement by 0.06 standard deviations, they aren't just asking for a slightly better GPA. They are effectively skipping over a noticeable chunk of that line. Wow. So they're just cutting out a huge portion of the applicant pool right away. Exactly. In the real world, this translates to an employer suddenly preferring a candidate with a specialized certification instead of just a general diploma. Or perhaps they're requiring a master's degree where a bachelor's used to suffice. So it is a tangible, measurable jump in the barrier to entry. Very tangible. Yes. But wait, if I'm playing the skeptic here, and I always like to play the skeptic, how do we know this isn't just an illusion caused by the types of jobs that went remote? What do you mean? Well, for instance, software engineering jobs naturally went remote very easily, right? Mm-hmm. And software engineering inherently requires more skills and degrees than, say, working as a barista or a retail clerk, which obviously stayed in person. Right, of course. Couldn't the data just be reflecting the fact that tech jobs require more skills than retail jobs? That is the exact trap that amateur data analysis falls into. Oh, really? Yeah. You cannot compare a remote data scientist in London to an in-person barista in Rome and conclude that remote work requires more skills. That's just bad math. Right, it's apples and oranges. Exactly. And the researchers knew this, which is why the methodology of this paper is so incredibly robust. To ensure they were making a true apples-to-apples comparison, they applied incredibly strict statistical controls known as fixed effects. Okay, how deep do those controls actually go? Because 50 million is a lot of noise to filter out. Very deep. They used what is called an occupation-employer country-year fixed effect. Okay, let me visualize this. That means they aren't looking at the tech industry versus the hospitality industry broadly. They are looking at, let's say, a massive multinational bank operating in France. Correct. They isolate the exact same occupation, let's say a financial analyst. Okay. They ensure the posting is from the exact same employer, so the bank in France. And they ensure both postings occurred in the exact same year. Wow. Yeah, they filter out all the noise until they are looking at two job descriptions that are identical in every conceivable way, except that one is labeled in person and the other is labeled remote. That is wild. So it's literally like a company posting a job for a junior graphic designer for their downtown office. They want someone who knows Adobe Creative Suite, maybe has a bachelor's degree, right out of school. Exactly. But for the remote version of that exact same graphic design job at the exact same company, they suddenly want someone with a master's degree, an extra year of agency experience, and proficiency in 3 additional software programs. Yes, that's exactly what the data shows. Even under a microscope that tight, the remote job demands more. Why the sudden premium? I mean, what is happening in the hiring manager's head to cause that? Well, the researchers uncovered a critical nuance in the data that begins to answer that psychological question. They ran the numbers again, but this time they statistically controlled for the number of skills requested. Okay, meaning they factored out the extra software proficiencies and hard skills. Yes. And when they held the number of skills constant, the employer's demand for extra education and extra years of experience dropped significantly by up to 40%, actually. Wait, let me process that. If holding the skills constant makes the demand for experience drop, that implies the employers don't actually care if the person is older. Right. And they don't care if they have a fancier degree on their wall just for the prestige of it. Exactly. They don't inherently desire an older workforce or a more credentialed one just for the sake of it. Then what do they want? What they specifically desperately want is more skills. They are using the extra years of experience and the advanced university degrees merely as a proxy. Ah, it's a guarantee. Yes. They need to ensure the candidate actually possesses a massive toolkit of abilities before they even log on for day one. Because they know they won't be able to teach them those skills. Which perfectly transitions us into understanding why the training has vanished in the first place. Yes, and to figure this out, the researchers didn't just stare at spreadsheets all day. Right. They actually went out and talked to the human beings making these hiring decisions. Because quantitative data tells us what is happening, but the qualitative data tells us why. Exactly. The authors conducted 37 semi-structured interviews with hiring managers, executives, and HR professionals who had substantial experience navigating both remote and in-person hiring landscapes.
And reading through those interview excerpts in the paper is genuinely eye-opening. You can literally feel the frustration of these managers bleeding through the text. You really can. The overriding theme from almost every conversation was that remote work completely obliterates informal on-the-job training. It brings us right back to our opening scenario of the panicked new hire in the living room. Yes, the ability to ask that quick over-the-shoulder question is completely gone. It is a profound structural loss. It is. When we analyze workplace learning, we have to draw a hard line between explicit knowledge and tacit knowledge. Okay, break that down for us. Explicit knowledge is easily codified. It's what you can put in an employee handbook or a training module. Like, here's how to log into the secure server, or here's the corporate expense policy. Here is the code of conduct, that sort of thing. Right. You can email that to a remote worker with zero friction. Right, it's binary. You either read the PDF or you didn't. But tacit knowledge is, well, it's like the ghost in the machine. It's the unwritten, invisible fabric of how a company actually functions day to day. Exactly. Tacit knowledge is knowing that a specific client gets highly anxious if you send project updates on a Friday afternoon. So you always send them on Thursday morning. Oh, that's such a good example. Or it's knowing the specific, calming tone of voice to use when the lead engineer is stressed about a deadline. Yes. Or understanding the unspoken political dynamics of a boardroom just by observing where people choose to sit before the meeting starts. Precisely. Historically, this knowledge is transferred organically. It happens at the water cooler, during 5-minute coffee chats, or quite literally just by a junior employee sitting next to a veteran and absorbing their professional behavior through sheer osmosis over the course of a year. One of the HR managers in the study articulated this so perfectly. They essentially said, we can film all the high production training videos we want, and we can write pristine manuals, but absolutely nothing replaces a new hire turning their chair around and saying, hey, I've got this really weird specific client scenario. How would you handle this? It's so true. In a remote setting, asking for help requires an enormous amount of psychological friction. You have to check their Slack status. Are they green? Are they away? Right, you have to craft a message that doesn't sound stupid. You might have to find calendar time and set up a formal 15-minute Zoom call. It turns a casual learning moment into a scheduled, formal event. And it severely hampers the manager's ability to monitor a new hire's confusion, too. How so? Well, in a physical office, a manager can walk back from the restroom, glance at a new employee's desk, and see them staring blankly at a screen, looking tense or frustrated. Oh yeah, you could read their body language. Right, and the manager can instantly intervene. They can say, hey, you look stuck on that spreadsheet. Let me show you a quick shortcut. Which saves them hours of frustration. Exactly. But in a remote environment, the manager only ever sees the final polish output, or unfortunately, the final failed output. They do not witness the struggle. That's a really sharp insight. Furthermore, the organic mentorships that naturally form in physical spaces, like the senior executive who takes a liking to a junior associate after chatting about a shared hobby in the break room, those are severely restricted. I completely see the human element here. I really do. But again, how do you take this qualitative, squishy human feeling from 37 interviews and prove it quantitatively across 50 million job postings? That seems like a massive leap for the researchers to make. It is a leap, but they executed a very elegant data check to bridge that gap. They utilized a metric from the Bureau of Labor Statistics, or BLS. Okay. The BLS maintains an on-the-job training score for hundreds of different occupations. Interesting. I didn't know that existed. Yeah, it's a great tool. This score basically quantifies how much post-hire training an average employee typically needs to actually do a specific job effectively. Okay, let's map this out. A job like an air traffic controller or maybe a specialized enterprise software salesperson would probably have a massive on-the-job training score, right? Absolutely. Even if you went to school for it, you have to learn the specific idiosyncratic systems of that exact radar tower or that exact sales territory. Yes, the localized knowledge is huge. Whereas a job like a freelance copywriter or an independent graphic designer might have a much lower score. Because writing a blog post is essentially the same process, regardless of where your desk is located. Precisely. So the authors hypothesized if the loss of this informal training is truly the engine driving employers to demand higher skills and remote work, then jobs that traditionally require high on-the-job training should see the most dramatic jump in skill requirements when they move to a remote setting. That is a very testable theory.
Did the data back that up? Overwhelmingly. For occupations with high training scores, the skill gap between remote and in-person jobs was vastly wider. It was a 35% increase in required skills for the remote versions. 35%. Yeah. But for jobs with low training scores, the increase was only 25%. That is fascinating. I'm trying to put myself in the shoes of the applicant here. Yeah. What does this all mean for the worker? It's a heavy burden. It really is. Are employers essentially offloading the cost, the time, and the heavy burden of professional development back onto the candidate? In many ways, yes. I keep thinking about this like buying furniture, honestly. Oh, how so? It feels like the shift from buying IKEA flat pack furniture to buying fully assembled pieces. In the old in-person model, the employer bought the flat pack, the raw, ambitious entry-level talent. I like this analogy. Right. And they were willing to spend the time, the tools, and the frustration to assemble that talent in the office. They'd put the pieces together. Now, because they don't have the tools to assemble them remotely, they refuse to buy the flat pack. They're only willing to pay for the fully built, pre-assembled candidate. That is a highly accurate analogy. The employer is paying a premium, either in the form of higher wages or in the time spent searching for the perfect candidate, specifically to avoid the friction and potential failure of remote assembly. Wow. And to synthesize this further, the authors also looked at the inverse scenario, occupations that are highly independent. Independent meaning what? These are roles where the worker typically operates in a silo, completing tasks without relying heavily on colleagues or constant managerial support. Okay, so if the theory holds, the remote penalty, that extra demand for skills, should be significantly smaller for those independent jobs. Yeah. Right. Because they didn't need the assembly in the first place. Exactly. For highly independent jobs, the difference in skill requirements between remote and in-person roles was noticeably minimized. If you don't require much support or interaction in the physical office, you aren't losing much support when you move to your living room. Right, the baseline was already isolated. The employer doesn't need to overcompensate for lost training because there was very little training occurring to begin with. It is incredibly satisfying when an academic theory lines up with actual human behavior that cleanly. But, that only explains the internal dynamics of the company. It doesn't explain the madness of the broader job market. No, it doesn't. Which brings us to a dynamic that I find genuinely terrifying from a competitive standpoint. The infinite applicant pool. Yes, this requires us to shift our focus from the internal psychology of the firm to the external macroeconomic dynamics of the labor market. Remote work entirely obliterates geographic borders. It just wipes them off the map. And that has profound consequences for supply and demand. Let's break down the math of that for a second. Historically, if I post a job for a marketing manager for an office located in, say, Cleveland, Ohio, my applicant pool is instantly physically constrained. Very constrained. I am limited to people who live within a 45-minute commute of Cleveland, plus maybe a tiny fraction of people who are desperate enough to uproot their entire lives and move to Ohio for this specific job. Which isn't many. Right. I might get realistically 30 highly qualified applicants. But if I change one word on that job posting, if I change Cleveland to remote, what happens? You open the floodgates to the entire hemisphere. As the interviews in the paper revealed, a job that historically pulled 30 local applicants can now easily pull 600 global applicants in a matter of 48 hours. 600 applicants in 2 days. That's insane. The sheer volume of incoming resumes is staggering, and it completely overwhelms traditional HR departments. One recruiter in the study painted a very vivid picture of this. They essentially admitted that they had to build a hiring process with an artificially high barrier to entry just to survive the initial screening phase. It was pure survival mode. The volume of resumes was literally drowning them. They are demanding master's degrees and extra years of experience, not necessarily because the job requires it, but as a blunt instrument to thin the herd. It is a survival mechanism for the HR professional. But, from a purely economic standpoint, it makes perfect sense. When the supply of labor vastly increases, the buyer, in this case, the employer, gains immense leverage. They can become incredibly, almost unreasonably selective. Because they have options? Exactly. They can demand a pristine resume, specialized software skills, and flawless experience simply because they know that statistically, out of a pool of 600 people from across the globe, someone will meet those extreme demands. But proving this phenomenon in the macro data must have been a nightmare.
I mean, how did the authors prove this dynamic without having access to the back-end applicant tracking systems of every company? That's a great point. Because when you look at a public job posting on LinkedIn or Indeed, it doesn't always tell you exactly how many people applied, especially not across 50 million postings. Right. They didn't have the literal applicant counts, so they had to rely on incredibly clever proxies to estimate the tightness or the looseness of the labor market. Proxies are always where the creativity of research shines. What was the first one? The first proxy they utilized was a metric called time to fill. They calculated historically how many days a firm typically had to keep a specific job posting active before they found a candidate and took it down. Okay. If a job takes a very long time to fill, it strongly suggests there is a local talent shortage. The employer is struggling. The local pool is shallow. Okay, so if an in-person job for a specialized data analyst traditionally took 60 or 70 days to fill, the employer was obviously suffering. They couldn't find the right person locally. Right. What happened to the skill requirements when they finally made that specific kind hard-to-fill job remote? They observed a massive 52% spike in skill requirements. 52%. That is enormous. It is. Because consider the psychology. For the first time ever, that employer was no longer constrained by their local talent shortage. They finally gained access to the deep ocean of global talent, and they immediately capitalized on it. They got greedy. They became incredibly picky, demanding far more skills than they ever could have gotten away with asking for in their local market. They were starved. And then they were given an all-you-can-eat buffet, so they only took the absolute best items on the menu. Right. What was the second proxy they used to prove this? They analyzed local unemployment rates. They looked at the data across Europe using the NUT TS2 regional level. NUT TS2. Give me a quick translation on that. What is NUT TS2? It's essentially the European Union's standardized method for slicing up countries into statistical regions. Think of it like looking at data at the state or county level rather than just the national level. Okay, that makes sense. It allows researchers to see the economic microclimates within a country. By using this, they could identify regions with persistently high unemployment rates. Got it. In those regions, the local talent pool is already massive. There are plenty of eager, qualified job seekers locally because jobs are generally scarce. So logically, making a job remote in a place that already has high unemployment wouldn't change the dynamic much for the employer, right? Correct. Because they already had a line out the door for any in-person job they posted. They already had their pick at the litter locally. Exactly. And the data confirmed this beautifully. In regions with high unemployment, making a job remote didn't change the skill requirements nearly as much. Because the leverage was already there. Right. The expanded global remote pool didn't offer a significant marginal benefit to the employer because their local pond was already overstocked with available talent. This brings me right back to the fishing analogy. If I throw a net in a tiny isolated pond, I'll happily take whatever fish I manage to catch. I can't afford to be picky, I need to eat. Right. But if you give me a hyper-advanced commercial trawler with deep-sea sonar and access to the entire ocean, my behavior changes instantly. I'm throwing back all the decent fish, all the good fish, and I'm only keeping the absolute perfect trophy-sized catches. It's a completely different game. But wait, I want to push back on this a little bit. This assumes that a pool of 600 remote applicants is full of trophy fish. But isn't there a massive spam problem with remote jobs? Oh, absolutely. Does an ocean of 600 applicants actually mean the candidates are better? Or does it just mean you have 550 desperate people spamming their resume via quick apply buttons? That is a highly astute pushback, and what's fascinating is that the qualitative interviews brought up this exact tension. They did. Yeah, some hiring managers actively complain that the average quality of the remote applicant pool actually goes down. That makes perfect sense. Because technology allows people to apply to remote jobs with a single click from anywhere in the world. You receive a deluge of candidates who haven't read the job description, who are entirely unqualified, or who are just blindly mass applying to hundreds of roles a day. Right. The resume spammers. So why on earth would an employer raise their requirements if the pool is mostly full of junk? Because of the mathematics of extreme positive tails. Okay, break that down. The respondents universally agreed on a harsh statistical reality. While the average quality of the pool drops due to the spam, the absolute best candidates in a pool of 600 will almost always be vastly superior to the absolute best candidates in a pool of 30. Even if 550 of those applications are pure junk, the top 10 candidates are going to be world-class.
Employers are raising their standards, not necessarily because the remote job is harder to execute, but simply because, statistically, they can capture that top 1%. That is a brutal reality for the modern job seeker. You used to compete against the best in your city. Now you're competing against the best in your time zone, or perhaps the entire hemisphere. It fundamentally changes the required level of excellence just to get an interview. It really does. Let's pivot to the third mechanism driving this trend, which dives deep into the anxiety and psychology of management, the trust deficit, and the shift to quantifiable metrics. This touches on the most fundamental human element of how we evaluate one another in a professional setting. Yes, the human connection. In a traditional physical office, managers evaluate their employees on a holistic, multi-dimensional spectrum. Yes, they look at your quarterly output, but they also continuously evaluate your soft traits. Like your vibe. Exactly. Are you a good cultural fit? Do you have a strong work ethic? Are you dedicated to the team? It's the performative aspect of corporate life. A manager can physically see you staying late at your desk, eating a sad salad out of a plastic container while you grind through a PowerPoint presentation. Right, they see the effort. They can literally see your posture. They can see you taking 10 minutes out of your day to help a confused colleague unjam the office printer. They gauge your energy in the hallway. In a remote setting, that visibility instantly drops to zero. And economists refer to this as an acute principal-agent problem. The principal, the employer, cannot directly observe the effort of the agent, the employee. So they have to guess. Without that face-to-face interaction, evaluating subjective qualities like dedication, loyalty, or cultural alignment becomes almost impossible. The authors theorize that this lack of oversight generates deep anxiety for managers. A total loss of control. To compensate for this trust deficit, employers unconsciously shift their hiring criteria toward hyper-quantifiable metrics. I think of it like the difference between coaching a sport and grading a final exam. Oh, that's interesting. Right. When you coach a sport, you watch the athlete practice every day. You know their heart, their hustle, their attitude. You trust them on game day, even if their stats aren't perfect, because you see the grind. Exactly. But grading a remote worker is like grading a standardized test from a student you've never even met. All you have is the final score. There is no hustle to observe. Just the output. So the theory goes, because they are essentially grading an exam, they demand candidates who have a massive track record of passing exams. Evaluating hard skills, software proficiencies, and elite degrees feels safer and more objective than trying to guess if someone has a good attitude over a slightly lagging 30-minute Zoom interview. The illusion of safety through numbers is a perfect way to describe it. If the manager can't physically see you working hard, they at least want a certified piece of paper that proves, Python, or a prestigious university degree that guarantees a baseline level of competence. It's a defensive mechanism. So the researchers set out to test this theory in the massive data set. But how do you measure trust or quantifiability across 50 million job postings? That sounds impossible. They approached it from multiple angles, actually. First, they categorized every single skill requested in the postings into 4 distinct buckets: cognitive skills, social interaction with coworkers, social interaction with customers, and tech or ICT skills. Okay, so if this trust deficit theory holds up perfectly, remote jobs should demand way more tech and cognitive skills and care significantly less about internal social skills, right? That would be a logical assumption. Because they just want you to put your head down in your living room and code or write or design without worrying about your water cooler charm. Broadly speaking, yes. The data showed that remote jobs heavily prioritize tech, cognitive, and customer service skills. Okay, so it tracks. But intriguingly, the demands for internal social skills, how well you interact with your own coworkers, were inconsistent across the data. They didn't unilaterally drop off, which implies a lingering contradiction. Employers still want collaborative team players, even if they have no idea how to actually measure that collaboration remotely. Did they look at regional differences in trust? Like, do different cultures handle this anxiety differently? They did, and it yielded compelling results. They mapped their job posting data against a sociological index that categorizes low trust versus high trust countries. Oh, that's fascinating.
The theory was that in countries with generally lower levels of interpersonal societal trust, the managerial anxiety over remote workers slacking off would be naturally higher. Right. If you don't trust your neighbor, you're not going to trust your remote employee. Exactly. This would lead to an even larger remote skill premium as managers desperately sought quantifiable safety. And indeed, the data showed that in lower trust countries, the skill gap between a remote and in-person jobs was slightly higher, which aligns perfectly with the mechanism. But I know the researchers went even further to test the measurability of these skills, and this is where I absolutely love the honesty of rigorous academic research. They really push the boundaries here. The authors had this beautiful, elegant theory that remote work makes hiring entirely transactional, robotic, and heavily biased toward easily measurable skills over soft cultural fit. It makes total sense. On paper, yes. But the data didn't hand them a perfect, flawless victory, did it? No, it did not. And to their immense credit, they were completely transparent about the mixed evidence they encountered. I love when researchers just admit that the data was messy. It's the hallmark of good science. To truly test the measurability of the requested skills, they deployed a highly innovative technique. They actually utilized OpenAI's GPT-4. Wow. Okay. They fed the vast array of European skills from the Lightcast data into the AI model and asked it to rate each skill on a strict measurability scale. They used AI to judge the skills. Yes. They were essentially asking the AI, is this skill objective and easy to prove through a test, or is it vague, subjective, and hard to quantify? That is such a fascinating use of AI in social science. And what did the AI reveal about these remote job postings? It revealed a curveball. The AI analysis showed that remote job postings did not necessarily ask for more measurable skills than in-person jobs. Wait, really? The distribution was remarkably similar. Furthermore, when the authors ran a textual analysis on the postings specifically looking for keywords related to firm culture, values, or ethos, they found that remote job postings talked about company culture just as much as in-person postings did. So the data essentially said, your theory is a bit too clean. Exactly. The real world is messy. The employers are still desperately clinging to the romantic idea of company culture, even when managing a fully distributed workforce across 6 time zones. They still want the vibe, even if they are hiring via a screen. It highlights a deep cognitive dissonance in modern management. Employers want the safety of quantifiable metrics, but they haven't figured out how to abandon the traditional human vocabulary of hiring. They want their cake and eat it too. They want the flawless, highly skilled resume, but they still want the charismatic, culturally aligned interview. They want it all. The anxiety over not being able to monitor employees is clearly real, and it is manifesting in this overall demand for more experienced prepackaged talent. Absolutely. But now we have to play devil's advocate. For you listening, we want to walk you through exactly how a top-tier paper defends itself against skeptics. Because anytime you publish a massive claim like remote work fundamentally alters the labor market, other academics are going to try to tear it apart. That is the nature of peer review. Could these findings just be a massive statistical illusion? Let's talk about bulletproofing the research. It is the absolute burden of the researcher to anticipate and dismantle counter-arguments. In economics, the most glaring critique here would be endogeneity, specifically reverse causality. Okay, let's translate that. What does reverse causality actually mean in this context? It means asking, are firms that offer remote work just systematically different kinds of firms to begin with? Perhaps they are highly progressive, highly tech-forward, elite companies that naturally demand higher skills anyway. If that's true, it's not the remote setting causing the skill jump, it's just the type of company that allows remote work. It's a chicken and egg problem. Do remote jobs demand more skills? Or do high-skilled companies just happen to offer remote jobs? Precisely. So how do you untangle that? How do you isolate the remote setting itself? You would basically need an instance where totally normal, old-school, traditional companies were forced to go remote completely against their will, so you could observe if their hiring habits suddenly changed too. You do. You need what economists call a natural experiment. And tragically, modern history provided one of the most massive natural experiments imaginable, the COVID-19 pandemic. Right. The authors utilized an instrumental variable, or 5E, approach to isolate this forced change. Okay, let's unpack the instrumental variable approach clearly. What is the instrument here? Think of an instrument as a massive shock to the system that forces a behavior change, but is completely unrelated to the underlying traits or preferences of the companies themselves. An external force? Exactly.
The authors utilized the Oxford Social Distancing Stringency Index, which meticulously measured how strict a country's government lockdown rules were on any given day. Okay. They interacted that lockdown index with an occupation's pre-pandemic teleworkability. Teleworkability meaning, could this specific job physically be executed on a laptop? Exactly. So a bartender or a factory worker has zero teleworkability. A financial auditor or a software developer has high teleworkability. Got it. Now imagine a traditional conservative accounting firm in Milan. They hate remote work. But suddenly the Italian government issues a strict lockdown mandate. That firm is forced to hire their next auditor remotely, regardless of their corporate preference. Oh, wow. So by cross-referencing the strictness of the lockdown with jobs that can be done on a computer, the researchers filtered out all the progressive tech companies and looked strictly at companies forced into remote work by the government. Yes. Did those forced companies still demand higher skills? They absolutely did. By isolating these forced transitions, the researchers proved that the remote setting itself caused the jump in skill requirements. That is incredible. In fact, the IV estimates showed an even stronger effect than the baseline data. A forced shift to remote work increased the number of required skills by a staggering 76% and required 0.2 additional years of prior work experience. The causal link is incredibly robust. That is bulletproof. But the authors didn't stop there. They went after other alternative theories. Let's look at what we can call the complete contract theory. Ah, yes. This is a common critique. A skeptic might say, hey, maybe remote job postings demand more skills simply because they are wordier. If you can't just talk to a person in the office to explain the job, HR feels the need to write down every single tiny duty in the job description to cover their bases legally. It's a very fair, practical critique. Are we just observing more verbose HR departments? Right. To test this, the authors mathematically controlled for the overall length of the job postings. They factored out the total word count. Yeah. And even when holding the length of the posting constant, the specific targeted demand for skills and experience remains significantly higher for the remote jobs. Brilliant. They anticipated the skepticism perfectly. Okay, how about this one? The first stage screening theory. Let's hear it. This is the idea that employers are just bluffing. They know they are going to get 600 applications for a remote marketing job, so they write a terrifyingly difficult master's degree requiring job description just to scare away the weak candidate. Just a scare tactic. But ultimately, when they actually hire someone, they end up hiring the exact same mid-level candidate they would have hired for the in-person job anyway. They are just using the job board as a scary filter. This is where the authors drop the hammer with an incredibly telling piece of economic data. Wages. Yes, the ultimate truth teller in economics. If employers were merely bluffing on the job posting and secretly hiring the same caliber of mid-level talent they always hired, the wages they pay would remain stagnant. Makes sense. But the authors analyzed the salary data within the postings and found that remote jobs actually pay higher wages. The baseline models showed wages 0.06 standard deviations higher, and the instrumental variable models showed an even higher premium. And as the old ruthless economic adage goes, capital doesn't just give away wage premiums out of the goodness of its heart. Definitely not. You do not pay someone more money if you aren't actually extracting higher skilled labor from them. They're paying more because they are genuinely successfully hiring more advanced, highly skilled talent. Exactly. The presence of the wage premium completely invalidates the idea that this is just a psychological screening bluff. Employers are demanding more, and they are actively opening their wallets to pay for it. But just to put the absolute final nail in the coffin, the researchers took one more extraordinary step. What was that? They moved out of the messy, real world of macro data and natural experiments, and they stepped into a highly controlled laboratory setting. Walk us through the prolific experiment they ran in March 2024. Yes, to completely eliminate real-world noise and isolate human psychology, the authors designed a pre-registered experiment utilizing 12,250 actual practicing hiring managers on the prolific platform. Real managers making real decisions. They gave these managers a detailed fictional scenario. You work for a New England-based semiconductor company, and you need to hire for a specific role, perhaps a data scientist, a marketing analyst, or a sales representative. And here is the magic of randomization in science. The managers were randomly assigned to either hire for that role as an on-site position or a remote position. Right. The fictional company is identical.
The roles duties are identical. The only piece of information the manager is told differently is the physical location of the worker. Exactly. And then they asked the managers to set the hiring criteria for the role. They asked them to select the necessary skills and the required years of experience. And what happened? The results of the lab experiment mirrored the 50 million job postings perfectly. The managers who were randomly assigned to the remote condition consciously deliberately chose to demand a higher number of skills and more years of prior experience than their peers hiring for the on-site role. Wow. It proved, in a vacuum, that the psychology of the hiring manager shifts defensively the exact moment the word remote is introduced. I just want to pause and appreciate the beauty of this multi-method approach. Yeah. It's like watching a masterclass in social science. It really is. They started by listening to managers intimately through qualitative interviews to understand the emotion. Then, they zoomed out and looked at the macro data of 50 million actual job postings to see the scale. Then they tested it against an act of nature, the COVID lockdowns, to prove causality. And finally, they replicated the exact human behavior in a highly controlled lab experiment. For you listening, whether you are a grad student designing your first study or just a fan of rigorous thinking, this is what a bulletproof paper looks like. It attacks the problem from every conceivable angle until only the core truth is left standing. It truly is an exemplar of modern empirical research. It leaves virtually no room for ambiguity regarding the core finding. The structural shift is real. So, as we bring all of these threads together into our final thoughts, let's distill the key takeaways. First, for the academics, economists, and researchers listening with us, this paper marks a massive, permanent shift in the literature on skill upgrading. Indeed it does. For decades, the academic consensus has largely blamed physical technology, robots, artificial intelligence, software automation, and globalization for wiping out middle-tier jobs and making it harder for average workers to gain a foothold. But this paper introduces an entirely new paradigm. It proves that the structure of work arrangements, the simple geography of where we place our laptops, is an entirely new, massive, and previously undocumented driver of labor market upgrading. And for the practitioners listening, if you are an HR director or if you are a hiring manager at a growing company, you need to deeply internalize this. You really do. Offering remote work isn't just a fun perk you casually toss in to seem modern and cool. It fundamentally changes the DNA of your organization. It changes who you can hire, what you must pay them, and critically, it means you are silently shifting the burden of training entirely onto the candidate. You are completely giving up the ability to mold raw, eager talent. It is a profound strategic trade-off. You are trading long-term developmental potential for immediate prepackaged competence. That is a choice executives need to make with their eyes wide open, fully understanding the costs, rather than stumbling into it by accident. Which opens up some deeply curious, somewhat unsettling questions for future research. Let's hear them. If remote work strictly demands fully formed, highly skilled, deeply experienced workers, what happens to the entry-level worker? Oh, that's a chilling thought. Where do the ambitious 22-year-old college grads go to learn the tacit knowledge if the physical offices are empty? That is the crisis on the horizon. This research raises urgent questions about systemic inequality. Does remote work inadvertently exacerbate a two-tiered society? It very well might. Are we building a labor market where only those lucky enough to have gained prior in-office experience before the pandemic or at massive legacy companies can ever possess the skills required to land a flexible, lucrative remote job? It's the ultimate professional paradox. You need remote skills to get the remote job, but you can only learn those skills in the physical office, which no longer wants to hire entry-level people. And looking forward, we have to wonder how emerging technologies might shift this again. How will AI tools, acting as virtual mentors or real-time co-pilots, change this dynamic? Could an AI agent eventually replace the veteran colleague sitting in the next cubicle? That is the next great frontier of workplace research. If an AI can successfully provide the tacit knowledge, the real-time feedback, and the emotional support that remote workers currently lack, it might eventually lower the barrier to entry back down. But until that technology is perfected, the remote skill premium remains a harsh, undeniable reality. It really is. So we leave you with this final thought to mull over as you go about your week. If the traditional, noisy, in-person office was society's grand training ground, and the new remote workspace is a high-stakes performance stage strictly reserved for those who are already experts, where is the next generation supposed to go to practice?
And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একটু কল্পনা করা যায় একজন নতুন কর্মীর কথা। আজ তার প্রথম দিন কাজ করতে গিয়ে সে হয়তো ভুলবশত একটা অত্যন্ত গোপনীয় বা ভুল তথ্যে ভরা ইমেল শুধু তার বসকে পাঠানোর বদলে পুরো কোম্পানির সবার কাছে রিপ্লাই অল করে পাঠিয়ে দিল। ওহ, মানে ভাবলেই তো কেমন বুকটা ধক করে ওঠে। একদম তাই। তো যদি সেই কর্মী অফিসে সশরীরে থাকতো তবে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে পাশের ডেস্কে বসা কোনো অভিজ্ঞ সহকর্মীর কাছে ছুটে যেত, গিয়ে হয়তো বলতো যে ভাই একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, কিভাবে এটা ঠিক করব এখন। হ্যাঁ, আর সহকর্মী হয়তো হেসে বলতেন, আরে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, আইটি বিভাগকে বলে দিচ্ছি, ওরা সার্ভার থেকে ডিলিট করে দেবে। কিন্তু ঘরে বসে রিমোট কাজ করার কারণে পরিস্থিতিটা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঠিক বলেছেন। সেই কর্মী হয়তো একা একটা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে, সমস্যা সমাধানের জন্য একটা জুম কলের অপেক্ষা করছে বা মেসেজ পাঠাচ্ছে। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে হয়তো তাৎক্ষণিক কোনো উত্তর আসছে না। যত সময় যাচ্ছে ছোট একটা ভুল ততই জটিল আকার ধারণ করছে। আর ঘরে বসে কাজ করার এই যে মনস্তাত্ত্বিক একাকিত্ব এবং তাৎক্ষণিক সাহায্যের অভাব, এটাই আসলে আজকের আলোচনার একটা বড় কেন্দ্রবিন্দু। মানে অফিসে থাকলে যে সাহায্যটা হয়তো কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার ছিল, রিমোট জবে সেটাই এক বিশাল পাহাড়ের মতো মনে হতে পারে। ঠিক। আর এই বাস্তবসম্মত এবং অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়টা নিয়েই আমাদের আজকের এই পর্ব। আমরা কথা বলছি অত্যন্ত সম্মানজনক FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্স কোয়ার্টারলিতে প্রকাশিত একটা অসাধারণ গবেষণাপত্র নিয়ে। হ্যাঁ, আর এই গবেষণার কারিগর হলেন নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির শিনান ওয়াং ও লেতিয়ান ঝাং এবং নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির জেনিউ লিয়াও। যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে একেবারেই নতুন পা রাখছেন, তাদের জন্য আজকের গবেষণার মূল কথাটা যদি খুব সহজ ভাষায় বলি, বলুন। বিষয়টা হলো সশরীরে উপস্থিতির চাকরির তুলনায় ঘরে বসে কাজ বা রিমোট ওয়ার্কের চাকরিতে নিয়োগকর্তারা প্রার্থীদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দক্ষতা দাবি করেন। মানে বেশি কাজের অভিজ্ঞতা আর উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাও চাইছেন তারা। একদম। অর্থাৎ একই পদের জন্য অফিসে কাজ করলে যে যোগ্যতা লাগতো, ঠিক একই পদের জন্য রিমোট জবের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতা চাওয়া হচ্ছে। শুনতে খুব সাধারণ মনে হলেও লেবার মার্কেট বা শ্রমবাজারের জন্য এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় আবিষ্কার। হ্যাঁ, কেন নিয়োগকর্তারা রিমোট জবের জন্য হঠাৎ করে এত বেশি দক্ষতা চাইছেন, সেটাই গবেষকরা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ঠিক। তবে এই চমৎকার গবেষণার গভীরে যাওয়ার আগে আমাদের নিয়মিত শ্রোতাদের জন্য কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দেওয়া প্রয়োজন। হ্যাঁ, অবশ্যই। অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছেন যে গত মার্চ 2026 থেকে আমাদের এই আয়োজনটা প্রতি সপ্তাহে 2 পর্বে প্রচারিত হচ্ছে, রোববার এবং সোমবার। হ্যাঁ, রোববারের আয়োজনে থাকছে ক্লাসিক পেপার বা বইয়ের পর্যালোচনা, আর সোমবারের আয়োজনে আমরা কথা বলছি শীর্ষস্থানীয় পিওর রিভিউড জার্নালের গবেষণাপত্রগুলো নিয়ে। এখন অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন, আমরা কেন প্রতিদিন একটা করে আলোচনা নিয়ে আসছি না? এর একটা বড় কারণ আছে আসলে। ঠিক বলেছেন। কারণটা হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত পডকাস্টের ব্যাক এন্ড ডেটা সেন্টারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে পানি আর শক্তির প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, আর এই বিপুল শক্তির ব্যবহার সরাসরি আমাদের পরিবেশ আর জলবায়ুর ওপর একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একদম। তাই পরিবেশ আর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবদান রাখতে, অথচ আলোচনার গভীরতা আর মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই লক্ষ্যে পর্বের সংখ্যা সপ্তাহে 2টিতে সীমাবদ্ধ রাখার এই উদ্যোগ। শ্রোতাদের নিরন্তর সমর্থন আর ভালোবাসার জন্যই আসলে আমরা এই উদ্যোগটা নিতে পেরেছি। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আর সেই সাথে জার্নাল সংক্রান্ত একটা ঘোষণাও দিয়ে রাখা ভালো। আমরা 2026 সালের FT50 জার্নাল তালিকার সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে সচেতন। তালিকা থেকে বাদ পড়া জার্নালগুলো কিন্তু এখনো অত্যন্ত সম্মানজনক। ঠিক তাই নতুন গবেষকদের সুবিধার্থে আমরা এই জার্নালগুলোকে আমেরিকাস FT তালিকাভুক্ত জার্নাল হিসাবে উল্লেখ করব। আর এর পাশাপাশি আগামী সেপ্টেম্বর 2026 থেকে সম্মানজনক প্র্যাকটিশনার জার্নাল MIT স্লোয়ান ম্যানেজমেন্ট রিভিউ এর প্রকাশনা বন্ধ হওয়ার একটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও এসছে।
হ্যাঁ, গত 6 দশকে ম্যানেজমেন্ট গবেষণায় তাদের অসামান্য অবদানের কথা আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। প্রকাশনা বন্ধ হলেও সুযোগ পেলেই আমাদের উইকেন্ড ক্লাসিক্স অংশে তাদের প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। একদম, কারণ আমাদের এই আয়োজন সবসময় কোনো সূচক বা তালিকার চেয়ে সাহিত্যের প্রকৃত প্রভাব আর গুণগত মানকে বেশি প্রাধান্য দেয়। ঠিক বলেছেন। আর গুণগত মানের কথা যখন উঠলই, শ্রোতাদের এই নিবিড়ভাবে পরীক্ষিত গবেষণাপত্রটা পড়ার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করব। লিঙ্ক শো নোটে দেওয়াই আছে। হ্যাঁ, তো চলুন এবার মূল আলোচনায় ফেরা যাক। আমরা তো শুরুতে বলেছিলাম যে রিমোট জবে অনেক বেশি দক্ষতা চাওয়া হচ্ছে। সমস্যাটা আসলে কোথায়? এর উত্তরটা কি কর্মীদের কাজ শেখানোর পদ্ধতির মধ্যে লুকিয়ে আছে বলে মনে হয়? হ্যাঁ, মানে একটা রূপক দিয়ে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধরুন, অফিসে সশরীরে কাজ শেখাটা হলো একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ কাঠমিস্ত্রির পাশে দাঁড়িয়ে ফার্নিচার বানানো শেখার মতো। ও আচ্ছা, হ্যাঁ। নতুন কেউ দেখছে কিভাবে কাঠ কাটা হচ্ছে বা কিভাবে মাপ নেওয়া হচ্ছে, সে ভুল করলে অভিজ্ঞ মিস্ত্রির সাথে সাথে হাত ধরে শুধরে দিচ্ছেন। আর রিমোট জবে কাজ শেখাটা হলো নতুন একজনকে শুধু একটা ম্যানুয়াল বই ধরিয়ে দিয়ে একটা ঘরে একা বসিয়ে বলা হলো, যাও একটা আস্ত আলমারি বানিয়ে ফেলো। একদম নিখুঁত একটা তুলনা। পেপারটিতে ঠিক এই মেকানিজমটিকেই বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে অ্যাসিনক্রোনাস বা অসমলয় যোগাযোগ হিসেবে। হ্যাঁ, মানে রিমোট কাজের ক্ষেত্রে তো বেশিরভাগ যোগাযোগই তাৎক্ষণিক হয় না। ঠিক, কেউ একজন হয়তো একটা মেসেজ দিলেন, অপরজন হয়তো মিটিংয়ে থাকার কারণে 2 ঘন্টা পর তার উত্তর দিলেন। ফলে ওই তাৎক্ষণিক ভুল শুধরে দেওয়া বা কাজ পর্যবেক্ষণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। একদম। যে কাজগুলোতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাতে কলমে শেখার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, সেখানে নিয়োগকর্তারা এখন এমন কর্মী খুঁজছেন যারা আগে থেকেই সব কাজ জানেন। মানে তারা আর কাউকে নতুন করে কাজ শেখানোর ঝুঁটিটা নিতে চাইছেন না। ঠিক তাই। তার মানে তারা চাইছেন একজন প্লাগ অ্যান্ড প্লে কর্মী, যাকে নিয়োগ দেওয়ার পরদিন থেকেই সে পুরোপুরি উৎপাদনশীল হতে পারে। ওই যে শুরুতে বলছিলেন, সেই নতুন কর্মী যদি একজন আগে থেকে অভিজ্ঞ কর্মী হতো, তবে হয়তো সে ওই ভুল ইমেলটা পাঠাতোই না। হ্যাঁ, আর পাঠালেও জানতো কিভাবে একা একাই দ্রুত আইটি পোর্টালে ঢুকে সেটা ঠিক করে ফেলতে হয়। মানে কোম্পানির দিক থেকে দেখলে এই কাজ শেখানোর পিছনে যে সময় আর অর্থের বিনিয়োগ, রিমোট জবে তারা সেটা করতে চাইছে না। কিন্তু এখানে তো একটা বড় ধরনের প্রশ্ন চলে আসে। কি রকম? নিয়োগকর্তারা যদি এত বেশি অভিজ্ঞ আর দক্ষ কর্মী চান, তবে তারা এই কর্মীদের পাচ্ছেন কোথা থেকে? ও আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা একটা দারুণ পয়েন্ট। আগে তো একটা পদের জন্য হয়তো শুধু একটা নির্দিষ্ট শহরের বা আশেপাশের এলাকার মানুষই আবেদন করতে পারত। এখন তো পুরো পৃথিবীটাই একটা বাজার। ভৌগোলিক সীমানাটা তো আর নেই বললেই চলে। হ্যাঁ, আগে চাকরি খোঁজা ছিল অনেকটা বিটিভির যুগের মতো। মাত্র 2টো চ্যানেল যা আছে তার মধ্য থেকেই আপনাকে বেছে নিতে হবে। আর রিমোট জবের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়ে গেছে একেবারে নেটফ্লিক্সের মতো। ঠিক, এত অপশন যে সিদ্ধান্ত নেওয়াই কঠিন হয়ে যায়। নেটফ্লিক্সের এই চয়েস প্যারালাইসিস বা সিদ্ধান্তহীনতার রূপকটা চমৎকার। এই গবেষণার দ্বিতীয় মেকানিজমটা হলো ঠিক এটাই, অসীম প্রার্থীর সমাগম। মানে প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, তাই তো? হ্যাঁ, গবেষকরা ডেটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখা নিয়েছেন যে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা না থাকায় রিমোট পদগুলোতে প্রার্থীর সংখ্যা 20% থেকে শুরু করে ক্ষেত্র বিশেষে 20 গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। 20 গুণ? হ্যাঁ। বাপরে। হ্যাঁ, ভেবে দেখুন, আগে যেখানে একটা পদের জন্য হয়তো 50 জন আবেদন করত, এখন সেখানে 1000 জন আবেদন করছে। একজন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজারের পক্ষে এত বিশাল সংখ্যক প্রার্থীর সিভি খুঁটিয়ে দেখা তো আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব। একদম অসম্ভব। তাহলে তারা এই হাজার হাজার সিভি থেকে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে কিভাবে? তারা কি শুধু ফিল্টার করার জন্য প্রাথমিক বাছাইয়ের মানদণ্ড কঠিন করে দেন? ঠিক তাই। মানে যে কাজের জন্য হয়তো ব্যাচেলর ডিগ্রি হলেই চলতো, সেখানে তারা শুধু সিভি কমানোর জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি চেয়ে বসেন। হ্যাঁ, গবেষকরা ঠিক এটাই প্রমাণ করেছেন। হাজার হাজার সিভি থেকে বাছাইয়ের জন্য তারা বাধ্য হয়েই চাহিদার তালিকা বড় করে দেন। বাহ, এটা তো একটা দারুণ কৌশল। হ্যাঁ, আর মজার ব্যাপার হলো গবেষকরা দেখিয়েছেন যেসব অঞ্চলে বেকারত্বের হার কম, অর্থাৎ যেখানে স্থানীয় প্রার্থীর বেশ অভাব রয়েছে, সেখানে কি হয়? সেখানে রিমোট জবে অতিরিক্ত দক্ষতা চাওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি দেখা যায়। ও আচ্ছা, মানে স্থানীয়ভাবে প্রার্থী না পাওয়ায় তারা রিমোটের বিশাল বাজারের দিকে ঝুঁকে পড়েন। হ্যাঁ, আর সেখান থেকে সর্বোচ্চ দক্ষ কর্মীটিকে ছেঁকে নিতে চান।
এতক্ষণ তো বুঝলাম কেন তারা অভিজ্ঞ কর্মী খুঁজছে আর কিভাবে বিশাল প্রার্থী পুল থেকে ফিল্টার করছে, কিন্তু আমার এখনো একটা জায়গায় বেশ খটকা লাগছে। কোন জায়গাটা? হাজার হাজার প্রার্থীর মধ্যে থেকে এমন একজনকে কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যাকে বাস্তবে কখনো চোখেই দেখা হয়নি? এটা একটা খুব যৌক্তিক প্রশ্ন। মানে অফিসে তো আমরা একসাথে লাঞ্চ করতে করতে বা চা খেতে খেতে মানুষের স্বভাব বুঝতে পারি। কে কতটা দায়িত্বশীল সেটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখলেই বোঝা যায়। হ্যাঁ, কালচারাল ফিট বা ব্যক্তিত্ব বোঝার ব্যাপারটা অফিসে অনেক সহজ। কিন্তু একটা ক্যামেরার ওপার থেকে জুম কলে মাত্র আধা ঘন্টার আলাপে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব বোঝা সম্ভব কিভাবে? ঠিক এই জায়গাটিতেই গবেষকরা অর্থনীতির একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তত্ত্ব প্রিন্সিপাল এজেন্ট থিওরির কথা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ও আচ্ছা, এই প্রিন্সিপাল এজেন্ট থিওরিটা একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলা যায় কি? হ্যাঁ, অবশ্যই। এখানে প্রিন্সিপাল হলো মালিক বা নিয়োগকর্তা আর এজেন্ট হলো কর্মী। আচ্ছা, তখন একটা আস্থার সংকট তৈরি হয়। মানে চোখের আড়াল হলেই তো একটা সন্দেহের অবকাশ থাকে। একদম। অফিসে একজন কর্মী কতক্ষণ ডেস্কে বসে আছেন, কতটা মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন তা তো সরাসরি চোখে দেখা যায়। হ্যাঁ, কিন্তু রিমোট জবে কেউ তো আর কর্মীর ল্যাপটপের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে না। ঠিক তাই। নিয়োগকর্তারা প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব বা মৌখিক প্রতিশ্রুতির চেয়ে পরিমাপযোগ্য বিষয়গুলো বা মেজারেবল মেট্রিক্সের ওপর অনেক বেশি জোর দেন। তার মানে কোম্পানিগুলো মানুষকে বিশ্বাস করতে ভয় পাচ্ছে, তাই কাগজের সার্টিফিকেটের উপর ভরসা করছে। হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। তারা কি দেখতে চায়? যে প্রার্থীর নির্দিষ্ট সফটওয়্যার স্কিল আছে কিনা বা কটা প্রফেশনাল সনদ আছে? হ্যাঁ, তারা এমন কিছু খুঁজছেন যা কাগজে কলমে প্রমাণ করা যায়। বুঝতে পেরেছি। প্রমাণটি ডেটাতে কিছুটা মিশ্র। ও আচ্ছা, মানে সব ডেটা সরাসরি এই তত্ত্বকে সমর্থন করে না? হ্যাঁ, শতভাগ সমর্থন করে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একটা বড় মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। দারুণ, কিন্তু আমার মনে আরেকটা সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। বলুন। এই পুরো বিষয়টা যে নিছক কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় তা আমরা কিভাবে নিশ্চিত হব? মানে আপনি বলতে চাইছেন রিমোট জবগুলো এমনিতেই হয়তো উচ্চ পদের চাকরি? হ্যাঁ, ঠিক তাই। হয়তো রিমোট জব মানেই সিইও, ডিরেক্টর বা সিনিয়র ডেভেলপার লেভেলের কাজ, আর স্বাভাবিকভাবেই ওই উঁচু পদগুলোতে বেশি দক্ষতা চাইবে। একটা ভ্যালিড পয়েন্ট। গবেষকরা কিভাবে প্রমাণ করলেন যে এই অতিরিক্ত দক্ষতার চাহিদা শুধু রিমোট হওয়ার কারণেই হচ্ছে? এটা একটা দুর্দান্ত প্রশ্ন। গবেষক দল আসলে কতটা বিশাল কর্মযোগ্য সাধন করেছেন তা জানলে চমকে যেতে হয়। তাই নাকি? তারা কি করেছেন? তারা শুধু 2-4টে কোম্পানি নিয়ে কাজ করেননি। তারা ইউরোপের 28টি দেশের 5 কোটি অনলাইন জব পোস্টিং বিশ্লেষণ করেছেন। 5 কোটি? এটা তো বিশাল ব্যাপার। হ্যাঁ, আর আপনার ওই সন্দেহের জায়গাটি তারা অত্যন্ত কড়াকড়ি ফিক্সড এফেক্টস মডেল ব্যবহার করে দূর করেছেন। একটু থামাই। যারা পরিসংখ্যান বা অর্থনীতির ছাত্র নন তাদের জন্য এই ফিক্সড এফেক্টস বিষয়টা কিভাবে কাজ করে? হ্যাঁ, এটা আসলে অ্যাপল টু অ্যাপল তুলনা বলা যেতে পারে। মানে জিনিসটাকে একেবারে সমান সমান তুলনায় নিয়ে আসে। ঠিক ধরেছেন। ধরুন একটা নির্দিষ্ট কোম্পানি একটা নির্দিষ্ট বছরে একই দেশে ডেটা অ্যানালিস্ট পদের জন্য 2টো বিজ্ঞাপন দিল। আচ্ছা। একটা বিজ্ঞাপন হলো অফিসে এসে কাজ করার জন্য, আর অন্যটা হলো রিমোট বা ঘরে বসে কাজ করার জন্য। বুঝতে পারছি। গবেষকরা ঠিক এই 2টো বিজ্ঞাপনের মধ্যে তুলনা করেছেন, অর্থাৎ একই বছর, একই কোম্পানি এবং একই পদ, শুধু পার্থক্য হলো একটা অফিস এবং অন্যটা রিমোট। ও আচ্ছা, আর ফলাফল কি এলো? দেখা গেছে শুধু রিমোট হওয়ার কারণে ওই একই কোম্পানি একই পদের জন্য বেশি দক্ষতা আর অভিজ্ঞতা চাইছে। বাহ, এটা তো সত্যি একেবারে অকাট্য প্রমাণ। একই পদের জন্য অফিসে হলে এক নিয়ম আর রিমোট হলে আরেক নিয়ম। হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু তবুও কেউ তো তর্ক করতেই পারে যে কোম্পানিগুলো হয়তো রিমোটে এমন কাজই দেয় যেগুলো একটু বেশি জটিল। এর কি কোনো পাল্টা যুক্তি আছে পেপারে? হ্যাঁ, গবেষকরা জানতেন যে এই ধরনের প্রশ্ন উঠবে, তাই তারা ইনস্ট্রুমেন্টাল ভ্যারিয়েবল নামের একটা বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। ইনস্ট্রুমেন্টাল ভ্যারিয়েবল? বিষয়টা তো একটু খটমটে লাগছে। হ্যাঁ, একটু খটমটি তো বটেই। এর মানে কি এই যে তারা এমন কোনো বাইরের প্রভাব খুঁজে বের করেছেন যা শুধু রিমোট কাজকেই প্রভাবিত করেছে? একদম ঠিক। তারা কোভিড-19 মহামারীর সময়কার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং পলিসি বা সামাজিক দূরত্বের বিধিনিষেধগুলোকে সেই প্রভাব হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ও
ও আচ্ছা, মানে যখন সবাইকে বাধ্য হয়ে ঘরে বসে কাজ করতে হয়েছিল। হ্যাঁ, হঠাৎ করে আসা এই মহামারীর কারণে বাধ্য হয়ে যেসব কোম্পানিকে রিমোটে যেতে হয়েছিল, সেখানে কোম্পানিগুলোর নিজস্ব কোনো পছন্দ অপছন্দ ছিল না। তখন তো সবাইকেই রিমোটে যেতে হয়েছে। ঠিক, কিন্তু দেখা গেল জোরপূর্বক রিমোটে যাওয়ার পরও সেখানে দক্ষতার চাহিদা বেড়ে গেছে। তার মানে এটা কোম্পানির কোনো গোপন পলিসি নয়, বরং কাজের ধরনটাই তাদের বাধ্য করছে বেশি স্কিল চাইতে। একদম। এছাড়াও তারা প্রলিফিক প্ল্যাটফর্মে 1250 জন ম্যানেজারের উপর একটা চমৎকার অনলাইন পরীক্ষাও চালিয়েছিলেন। সেখানে কি দেখা গেল? সেই পরীক্ষাতে ম্যানেজারদের বলা হয়েছিল কাল্পনিকভাবে কর্মী বাছাই করতে। দেখা গেছে যখন একজন ম্যানেজারকে রিমোট জবের জন্য কর্মী বাছাই করতে বলা হয়, উনি স্বভাবতই এবং অবচেতনভাবে বেশি অভিজ্ঞতার শর্ত জুড়ে দেন। দারুণ ব্যাপার তো। হ্যাঁ, আর মজার ব্যাপার হলো 5 কোটি ডেটায় আরও দেখা যায় এই অতিরিক্ত দক্ষতার কারণে রিমোট জবের বেতনও তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি হয়। তার মানে কোম্পানিগুলো প্রি ট্রেন্ড কর্মীর জন্য প্রিমিয়াম দিতেও রাজি? হ্যাঁ, ঠিক তাই। তারা বুঝতে পারছে যে কাজ শেখানোর পেছনে যে সময় বা অর্থ ব্যয় হতো, সেটা সরাসরি বেতন হিসাবে দিয়ে দেওয়াটাই বেশি লাভজনক। একদম। ট্রেনিংয়ের পেছনে অর্থ ও সময় ব্যয় করার বদলে তারা এমন কাউকে বেশি বেতন দিয়ে নিয়ে আসছে যে প্রথম দিন থেকে কাজ শুরু করে দিতে পারবে। আমরা আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এত বিশাল ডেটা, এতগুলো থিওরি আর এত চমৎকার সব যুক্তির পর আজকের এই আলোচনা থেকে আসলে কি শেখা গেল? মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। আচ্ছা, প্রথমটা কি? প্রথমত একাডেমিক বা অর্থনীতিবিদদের জন্য। দীর্ঘদিন ধরে মনে করা হতো লেবার মার্কেটে দক্ষতার মানোন্নয়ন বা স্কিল আপগ্রেডিংয়ের প্রধান কারণ হল অটোমেশন বা বিশ্বায়ন। মানে যন্ত্রের কারণে মানুষের কাজ কমে যাচ্ছে, তাই টিকে থাকতে আরও বেশি দক্ষতা লাগছে, এই তো? হ্যাঁ, কিন্তু এই গবেষণাটা সম্পূর্ণ নতুন একটা দিক উন্মোচন করেছে। সেটা কিরকম? কাজের ধরন বা ওয়ার্ক অ্যারেঞ্জমেন্ট, যেমন রিমোট ওয়ার্ক, যে দক্ষতার মান উন্নয়নের একটা বিশাল কারণ হতে পারে, তা আগে এভাবে কেউ ভাবেনি। সত্যি ভাবার মতো একটা বিষয়। আর দ্বিতীয়ত, যারা বাস্তবে কোম্পানি চালাচ্ছেন বা হিউম্যান রিসোর্সে কাজ করছেন, তাদের জন্য বার্তাটা কি? তাদের বুঝতে হবে যে রিমোট কাজের এই দুনিয়ায় পুরনো নিয়োগ পদ্ধতি বা অনবোর্ডিং প্রসেস আর খাটবে না। মানে শুধু একটা ম্যানুয়াল ধরিয়ে দিয়ে আশা করা যায় না যে তারা সব নিজে নিজে শিখে নেবে। একদমই না। যদি রিমোট কর্মীদের কাছ থেকে সেরাটা পেতে হয়, তবে তাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটা কাঠামো তৈরি করতে হবে। তাহলে এই সব কিছুর অর্থ কি দাঁড়ায়? এই আলোচনা কি আমাদের সমাজের একটা অন্ধকার দিকের দিকেও ইঙ্গিত করছে না? আপনি কোন দিকটার কথা বলছেন? যদি প্রতিটি রিমোট জবে সবসময় পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মী খোঁজা হয়, তবে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করা তরুণ তরুণীরা কিভাবে কাজ শিখবে? ও হ্যাঁ, এটা একটা বিরাট চিন্তার বিষয়। তাদের প্রথম কাজের অভিজ্ঞতা কোথা থেকে আসবে? অফিসে সিনিয়রদের দেখে কাজ শেখার যে সুযোগটা আগে ছিল, সেটা যদি রিমোট জবের কারণে হারিয়ে যায়, তবে কি সমাজে নতুন ধরনের একটা বৈষম্য তৈরি হচ্ছে না? যারা আগে থেকেই কাজ জানেন তারা আরও সুযোগ পাবেন। হ্যাঁ, আর যারা নতুন তারা কি পিছিয়েই পড়বেন? এটা অত্যন্ত গভীর আর চিন্তায় ফেলে দেওয়ার মতো একটা প্রশ্ন। একদম। কাজের ভবিষ্যৎ আসলে শুধু কোথায় কাজ হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে না, বরং কাকে কাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং কিভাবে তাকে গড়ে তোলা হচ্ছে তার ওপরও ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ঠিক বলেছেন। এই চমৎকার গবেষণাটা আমাদের সেই আয়নাটাই ঘুরিয়ে দেখাল, যা নিয়ে হয়তো আগামী দিনে আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন হবে। সত্যিই তাই। নতুন কোনো বিষয় নিয়ে, নতুন কোনো চিন্তার খোরাক নিয়ে আমরা আবারও ফিরে আসব। হ্যাঁ, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। রিমোট কাজের দুনিয়ায় নিজের দক্ষতাকে কিভাবে আরও শানিত করা যায়, আর চারপাশের বদলে যাওয়া পৃথিবীর দিকে কিভাবে তীক্ষ্ণ নজর রাখা যায়, সেই চিন্তার ভার শ্রোতাদের উপর ছেড়েই আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए, एक नया कर्मचारी है, किसी नई नौकरी का बिल्कुल पहला हफ्ता चल रहा है और वो अपने घर से काम कर रहा है। काम के दौरान एक बहुत आम सी गलती होती है और वो अनजाने में एक बेहद ज़रूरी लेकिन गलत जानकारी वाला ईमेल पूरी कंपनी को भेज देता है, या शायद किसी सबसे बड़े क्लाइंट को भेज देता है। ओ बाप रे,
ये तो मतलब किसी भी नए प्रोफेशनल के लिए एक सबसे बड़ा डरावना सपना है। सही में। अब इस स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। अगर यही व्यक्ति किसी दफ्तर में होता, यानी ऑफिस में होता, तो शायद ईमेल का सेंड बटन दबाने से ठीक पहले अपने बगल में बैठे किसी सीनियर से तुरंत एक छोटा सा सवाल पूछ लेता। बिल्कुल। या फिर जैसी वो गलती होती, आसपास बैठे लोग उसके चेहरे की घबराहट देख लेते, उसकी स्क्रीन देखकर तुरंत मदद के लिए आगे आ जाते और डैमेज कंट्रोल कुछ ही सेकंड्स में हो जाता। इंतजार करना, एक वीडियो कॉल सेट करना, इस सब में जो समय लगता है उसमें नुकसान पूरी तरह से हो चुका होता है। ये सिर्फ एक द्रवित करने वाली कहानी नहीं है। असल में ये रिमोट वर्क यानी घर से काम करने के दौरान ऑन द जॉब ट्रेनिंग और रोजमर्रा की सपोर्ट की सबसे बड़ी चुनौती का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। सही बात है। और आज की इस चर्चा में हम इसी जटिलता को समझेंगे। आज जिस सोर्स मटेरियल पर हम विचार कर रहे हैं वो एक बेहद प्रतिष्ठित FT50 लिस्टेड जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित एक असली और बेहद गहरा रिसर्च आर्टिकल है। हाँ, और इस पेपर के लेखकों का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। इसे नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शिनान वांग और लीथियान ज़ैंग ने नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के ज़ेन्यू लियाओ के साथ मिलकर लिखा है। इन तीनों स्कॉलर्स का काम वाकई तारीफ के काबिल है। बिल्कुल। इन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया को अपने हायरिंग तरीकों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इस विश्लेषण की गहराई में उतरने से पहले इस चर्चा को नियमित रूप से सुनने वालों के लिए एक बहुत ही आत्मीय और जरूरी सूचना है। हाँ, हमारे नियमित श्रोताओं के लिए एक अपडेट है। मार्च 2026 से ये कार्यक्रम अब साप्ताहिक यानी वीकली हो गया है। नए प्रस्तुतिकरण अब हर रविवार और सोमवार को ही आएंगे। और इसमें हमने एक छोटा सा डिवीजन किया है। रविवार का दिन क्लासिकल एकेडमिक पेपर्स और बेहतरीन बुक रिव्यूज के लिए समर्पित रहेगा, जबकि सोमवार को ध्यान टॉप टियर पीयर रिव्यू जर्नल्स में छपे नई पब्लिकेशंस पर केंद्रित रहेगा। हमारे सभी नियमित श्रोताओं के लगातार समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। और इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही संगीन कारण जुड़ा है जिसे हम साझा करना चाहते हैं। आजकल AI आधारित कार्यक्रमों का प्रकृति और जलवायु यानी क्लाइमेट पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। सही बात है। खासकर जो बैक एंड डेटा सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए पानी की खपत यानी वाटर इनटेक बेहद चिंताजनक स्तर पर होती है। कार्यक्रम की आवृत्ति को हफ्ते में थोड़ा सीमित करना एक छोटा सा कदम है, एक जरूरी कदम। इसकी वैचारिक गहराई को खोए बिना जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने और क्लाइमेट चेंज की पहल में योगदान देने का हमारा यह एक प्रयास है, एक शांत और बेहतर भविष्य के लिए। इसके साथ ही एकेडमिक शोध की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए कुछ और जरूरी बातें हैं। हम 2026 की FT50 जर्नल लिस्ट में हाल ही में हुए बदलावों से पूरी तरह अवगत हैं। क्लासिक्स और सोमवार के कार्यक्रमों में लगातार जारी रहेगी। हाँ, उनकी अहमियत कम नहीं होती। इसीलिए नए शोधार्ताओं की सुविधा के लिए इन जर्नल्स को हम सम्मान पूर्वक एमिरेटस FT लिस्टेड जर्नल कहेंगे। एक और बड़ा अपडेट ये है कि प्रतिष्ठित प्रैक्टिशनर जर्नल MIT स्लोन मैनेजमेंट रिव्यू का प्रकाशन सितंबर 2026 से बंद होने की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। ये एक युग का अंत जैसा है। सही में पिछले 6 दशकों में मैनेजमेंट रिसर्च और प्रैक्टिस में इस जर्नल ने जो योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसके बेहतरीन आर्टिकल समय समय पर हमारे वीकेंड क्लासिक्स का हिस्सा बनते रहेंगे। एक एकेडमिक कम्युनिटी मंच के रूप में किसी भी इंडेक्स से लिस्ट से ज्यादा लिटरेचर के प्रभाव और गुणवत्ता को ही प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल। इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। तो वापस आते हैं आज के इस बेहद प्रभावशाली मुद्दे पर। हाँ, और श्रोताओं से आग्रह है कि शो नोट्स में दिए गए लिंक पर जाकर इस सोच समझकर लिखे गए और कठोर पीयर रिव्यू से गुजरे आर्टिकल को जरूर पढ़ें। खासकर उन नए स्कॉलर्स के लिए जो अभी एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं। इस पेपर को अगर बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाए तो सवाल बस इतना है, जब कंपनियां रिमोट यानी घर से काम करने वाले पदों के लिए भर्तियां करती हैं तो क्या वो ऑफिस आकर काम करने वालों की तुलना में ज्यादा स्किल्स और अनुभव की मांग करती हैं? और इस शोध का सीधा सा जवाब है हाँ। रिमोट वर्क के कारण श्रम बाजार में यानी लेबर मार्केट में एक विशाल स्तर पर स्किल अपग्रेडिंग हो रही है। लोग ज्यादा क्वालिफाइड चाहिए उन्हें। सही बात है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं, क्योंकि किसी थ्योरी को सिर्फ शब्दों में कह देना एक बात है, लेकिन उसको ठोस डेटा के साथ साबित करना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। और इस पेपर का डेटा कोई छोटा मोटा नहीं है। इन लेखकों ने यूरोप के 28 देशों से यानी 28 EU कंट्रीज से 5 करोड़ से भी ज्यादा जॉब पोस्टिंग्स का विश्लेषण किया है।
50 मिलियन। वो भी 2018 से 2021 के बीच का डेटा। हाँ, और इसको एनालाइज करने के लिए एक विशेष डिक्शनरी बेस्ड मेथड का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब बस इतना है कि एक एल्गोरिदम लगभग 60,000 वेबसाइट्स को स्कैन करके टेलीकम्यूट या रिमोट जैसे शब्दों को ढूंढ रहा था। और जब ये शब्द मिलते हैं तो एल्गोरिदम देखता है कि क्या उस नौकरी में लीडरशिप या एडवांस्ड कोडिंग जैसे उच्च कौशल वाले शब्दों का इस्तेमाल बढ़ गया है। यानी रिमोट और इन पर्सन नौकरियों के शब्दों की बिल्कुल आमने सामने तुलना की गई और नतीजा बेहद हैरान करने वाला था मेरे हिसाब से। बहुत हैरान करने वाला। डेटा बताता है कि जब एक ही कंपनी एक ही देश में बिल्कुल एक ही पद के लिए रिमोट और इन पर्सन जॉब निकालती है तो रिमोट जॉब में लगभग 25% अधिक स्किल्स की मांग की जाती है। 25% बस इसलिए क्योंकि काम घर से हो रहा है? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, 0.1 साल अधिक कार्यानुभव और यहाँ तक कि उच्च शैक्षणिक योग्यताओं की शर्त भी रखी जाती है। इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से देखते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि अगर आप किसी एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप होम डिलीवरी मंगाते हैं तो वो रेस्टोरेंट अचानक ही उम्मीद करने लगता है कि आपको खुद भी थोड़ी बहुत कुकिंग आनी चाहिए। ये बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर्स आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि इस पेपर में इसके 3 मुख्य कारण या मैकेनिज्म्स बेहद विस्तार से बताए गए हैं। पहला कारण सीधे तौर पर उसी कहानी से जुड़ता है जिससे इस चर्चा की शुरुआत हुई थी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और सपोर्ट की चुनौती। यानी लोगों को दूर से सिखाना। बिल्कुल। ऑफिस में एक नया कोडर अपने सीनियर को कोडिंग करते हुए सिर्फ ऑब्जर्व करके या लंच के समय एक छोटी सी बातचीत से जो सीख लेता है, जिसे हम टैसिट नॉलेज कहते हैं, वो रिमोट वर्क में गायब हो जाता है। वहाँ कम्युनिकेशन एसिंक्रोनस होता है। सवाल अभी पूछा और जवाब घंटों बाद मिला। लेकिन एक मिनट, इस पर एक आलोचनात्मक सवाल उठाना बनता है। आज के इस तकनीकी युग में जब हर चीज के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, स्क्रीन शेयरिंग है, तो क्या कागज या वीडियो पर ट्रेनिंग देकर इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता? देखिए, पेपर पे क्वालिटेटिव इंटरव्यूज से ये हकीकत बिल्कुल साफ हो गई है कि हर चीज कागज पर नहीं उतारी जा सकती। जब किसी नौकरी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग और इंटरडिपेंडेंस यानी दूसरों पर निर्भरता बहुत ज्यादा होती है तो एक लंबी पीडीएफ फाइल काम नहीं आती। अच्छा। कंपनियों को वक्त बचाना है, इसीलिए उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो पहले से ही काम में माहिर हों, ताकि उन्हें कम से कम सिखाना पड़े। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिमोट वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदल रहा है, बल्कि ये भी बदल रहा है कि काम के लिए आवेदन कौन कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये दूसरा कारण है आवेदकों का विशाल समूह, यानी द ग्लोबल एप्लीकेंट पूल। इसको ऐसे सोचिए कि आपके स्थानीय क्रिकेट टीम है और अचानक नियम बदल दिए जाएं कि अब पूरी दुनिया से कोई भी खिलाड़ी इस टीम के लिए आवेदन कर सकता है। जब एक जॉब के लिए दुनिया भर से हजारों रेज्यूमे आने लगते हैं तो छटनी करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अपने मापदंड बढ़ा देना, स्टैंडर्ड्स ऊपर कर देना। जब रिमोट जॉब होती है तो आवेदकों की संख्या 10 से 20 गुना तक बढ़ जाती है। पेपर में पाया गया कि जो नौकरियां आमतौर पर भरनी सबसे मुश्किल होती थी, हार्ड टू फिल जॉब्स, उनमें रिमोट वर्क का विकल्प आते ही स्किल्स की मांग में लगभग 52% तक का उछाल आया। 52%। ओह वाह! लेकिन क्या हर जगह ऐसा ही होता है? क्या इसका असर उन इलाकों में भी उतना ही पड़ता है जहां पहले से ही लोगों के पास नौकरियां नहीं है? ये एक बहुत ही जरूरी न्यूएंस है इस रिसर्च में। जिन इलाकों में बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से अधिक थी, वहां ये असर कम दिखा। क्यों? क्योंकि वहां की कंपनियों के पास स्थानीय आवेदकों की पहले से ही कोई कमी नहीं थी। भीड़ पहले से थी, तो रिमोट होने पर उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स अचानक इतने ज्यादा नहीं बढ़ाने पड़े। समझ गया। तो अब इसके तीसरे और आखिरी मुख्य कारण की तरफ बढ़ते हैं। इतने सारे अनजान आवेदकों में से चयन करते समय कंपनी आखिर किस पर भरोसा करे? रिमोट माहौल में ट्रस्ट और कंपनी का कल्चर बनाना सबसे मुश्किल होता है। यही तीसरा मैकेनिज्म है, मापने योग्य गुणों पर जोर और वेतन में वृद्धि, यानी मेजरेबिलिटी एंड वेजेस। जब आप किसी कर्मचारी को रोज आमने सामने नहीं देखते तो उसके डेडिकेशन को मापना लगभग असंभव होता है। हाँ, वहाँ कोई बॉडी लैंग्वेज या आई कांटेक्ट तो है नहीं। सही बात है। इसीलिए कंपनियां उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देती हैं जिन्हें ठोस रूप से मापा जा सके, जैसे सर्टिफिकेट्स, डिग्रियां और टेक्निकल स्किल्स, खासकर कॉग्निटिव और आईसीटी स्किल्स।
लेकिन क्या ये कंपनियां सिर्फ छटनी करने के लिए फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग के तौर पर ये मांगे बढ़ा रही हैं, या वो सच में इन स्किल्स के लिए बेहतर पैसे भी दे रही हैं? नहीं, वेतन सच में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावे के लिए मांगे बढ़ाई जा रही हैं। जॉब पोस्टिंग्स का डेटा इसकी पुष्टि करता है। और इस पेपर में एक बहुत ही शानदार ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट भी शामिल है, जो मार्च 2024 में किया गया था। उसमें क्या निकल कर आया? उस एक्सपेरिमेंट में 1200 से ज्यादा हायरिंग मैनेजर्स ने भाग लिया था। उनसे जब रिमोट रोल्स डिजाइन करने को कहा गया तो उन्होंने जानबूझकर ज्यादा स्किल्स मांगी और उसके बदले बेहतर वेतन यानी हायर वेजेस देने को भी तैयारी दिखाई। अरे वाह! अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या रिमोट वर्क हमारे रिश्तों को और ज्यादा ट्रांजैक्शनल बना रहा है, जिसमें कल्चर या मेंटरिंग का कोई खास योगदान नहीं बचा। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक एकेडमिक के नजरिए से और एक कंपनी चलाने वाले प्रैक्टिशनर के नजरिए से मेन टेकअवेज क्या निकल कर आते हैं? एकेडमिक्स के लिए ये पेपर स्किल अपग्रेडिंग का एक बिल्कुल नया पहलू सामने लाता है। अब तक हम यही मानते थे कि सिर्फ ऑटोमेशन और ग्लोबलाइजेशन से स्किल्स की मांग बढ़ती है, पर अब साफ है कि वर्क अरेंजमेंट यानी रिमोट वर्क भी इसका एक बेहद बड़ा कारण है। और प्रैक्टिशनर्स के लिए, खासकर एचआर डिपार्टमेंट के लिए, उन्हें अपने हायरिंग और ऑनबोर्डिंग के तरीकों पर फिर से विचार करने की सख्त जरूरत है। अगर सब कुछ पहले से सीखे सिखाए लोगों पर छोड़ दिया गया तो कंपनी के अंदर जूनियर टैलेंट का विकास तो पूरी तरह से रुक जाएगा। ये एक ऐसी चिंता है जो भविष्य के शोध के लिए एक नई दिशा या फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस खोलती है। मैं तो ये सोच रहा था कि आने वाले समय में अगर हर रिमोट जॉब के लिए पूर्व अनुभव अनिवार्य हो गया तो ताज़ा ग्रेजुएट्स आखिर कहाँ जाएंगे? एंट्री लेवल कर्मचारियों के लिए तो करियर की सीढ़ियां चढ़ना असंभव सा हो जाएगा। बिल्कुल, और ये मुद्दा सीधे तौर पर समाज में मौजूद असमानताओं को या इनइक्वालिटीज को और बढ़ाने की तरफ इशारा कर रहा है। नए शोधार्ताओं को इस बात की और गहराई में जाना चाहिए कि क्या रिमोट वर्क एक नया डिजिटल और एक्सपीरियंस डिवाइड पैदा कर रहा है। ये बेहद सोचे जाने योग्य तथ्य है। काम की दुनिया अब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। ये अपने आप में एक बदलती हुई मानसिकता बन चुकी है। लेकिन जब दूरियां हमारे काम को इतना आसान बनाती हैं तो क्या वो इंसान और इंसान के बीच की उस अनकही समझ को, उस एम्पैथी को धीरे धीरे ख़त्म कर रही हैं जो हमें बेहतर बनाती हैं? इस तेजी से बदलते हुए वर्कप्लेस में जहां टेक्निकल स्किल्स की इतनी भारी मांग है, शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तकनीक से ज़्यादा अपनी मानवीय सहानुभूति को अपग्रेड करने पर ध्यान दें। Forestil dig lige det her. Du har din allerførste uge på et nyt job. Den der nervepirrende første uge, hvor man bare vil gøre alt rigtigt. Lige præcis. Du sidder hjemme i din stue, du er mega spændt, og du forsøger virkelig at gøre det perfekte førstehåndsindtryk. Men så sker det der bare ikke måske. Nej, hvad gør du? Du kommer ved et uheld til at sende en dybt fortrolig og fuldstændig fejlagtig e-mail ud til hele afdelingen. Wow. Det er jo simpelthen mareridtet over dem alle. Det er det virkelig. Og altså, hvis du sad på et fysisk kontor lige nu, så kunne du jo bare rejse dig op, kigge over skrivebordet, og i ren panik bed dine erfarne kolleger om hjælp. Ja, de vil sikkert bare grine lidt, trille deres stol over til dig og vise dig, hvordan du lynhurtigt sletter e-mailen i systemet. Nemlig. Men fordi du arbejder hjemmefra, så er du alene. Der er ingen at kigge over på. Du stirrer bare på skærmen, ikke? Du sender en febrilsk chatbesked på Teams, og så venter du bare. Du venter. Minutterne føles som timer. Skaden sker jo, den spreder sig, og din mangel på erfaring bliver ligesom udstillet for alle, før nogen overhovedet har svaret på din chat. Det er en utrolig sårbar situation at stå i, og den fanger faktisk selve essensen af de usynlige barrierer, der er i det moderne arbejdsliv. Og det er præcis den frustrerende virkelighed, der er grunden til, at arbejdsgiver verden over pludselig er begyndt at kræve enormt meget mere af deres fjernarbejdere. Ja, og det er netop det, vores samtale i dag bygger på. Vi kigger nemlig på en utrolig grundig forskningsartikel fra det prestigefyldte Administrative Science Quarterly. Og det er jo et tidsskrift, der ligger helt i toppen på den anerkendte FT50-liste. Præcis.
Forskningen er lavet af Shinan Wang og Letian Zhang fra Northwestern University, sammen med Zhenyu Liao fra Northeastern University. Og jeg vil virkelig opfordre dig, der lytter, til at tage dig tid til at læse den her fagfællebedømte artikel. Helt sikkert. Linket ligger selvfølgelig nede i noterne. Men inden vi åbner dataene helt op, så har vi faktisk lige en vigtig besked til dig om vores eget format. Ja, for fra med marts her i 2026, der er vi nemlig gået over til at udkomme 2 gange om ugen. Nemlig hver søndag og mandag. Søndagen er nu dedikeret til de store klassiske artikler eller boganmeldelser, mens vi om mandagen holder fokus på de absolut nyeste udgivelser fra de bedste fagfællebedømte tidsskrifter. Vi elsker vores loyale abonnenter, og tak fordi I støtter det her initiativ. Og der er faktisk en rigtig god grund til, at vi begrænser frekvensen. AI-assisterede lydproduktioner kræver nemlig utroligt meget af klimaet. Ja, det er noget med datacentrene, ikke? Jo, de underliggende datacenter har et enormt vandforbrug til køling. Så ved at begrænse vores ugenlige udgivelser, giver vi ligesom lidt tilbage til klimaindsatsen, uden at vi mister dybden i vores faglige diskussioner. Det er nemlig helt afgørende. Og mens vi er ved opdateringerne, så er vi selvfølgelig også bevidste om de seneste ændringer på FT50-listen for 2026. Ja, nogle af tidsskrifterne glider jo ud af listen, men vi vil gerne understrege, at de stadig er ekstremt prestigefyldte vidensinstitutioner. Lige præcis. Så for at hjælpe især nye forskere med at navigere, kalder vi dem fremover for Emeritus FT-listede tidsskrifter. Og i den forbindelse skal vi også nævne de legendariske praktikertidsskrift MIT Sloan Management Review. De har jo annonceret, at de indstiller produktionen fra september 2026. Hvilket er lidt vildt at tænke på, men det forringer på ingen måde deres kolossale bidrag til ledelsesforskningen gennem de sidste 60 år. Slet ikke. Vi vil fortsat fremhæve deres artikler i vores weekendsektion. For os handler det altid om litteraturens kvalitet og indflydelse frem for et eller andet bestemt indeks. Præcis. Det er det, der er kernen i et ægte akademisk fællesskab. Så tak fordi du lytter med og støtter os. Men lad os komme tilbage til sagen. Ja, lad os det. Hvis jeg skal koge artiklen ned for en, der måske er helt ny i forskningsverdenen, så er spørgsmålet egentlig meget simpelt. Okay, skyd. Forestil dig, at du skal ansættes i dag. Bliver kravene til dine evner og din erfaring højere, udelukkende fordi jobbet foregår hjemme fra køkkenbordet i stedet for på et fysisk kontor? Og hvad siger tallene så? For forvalterne har jo analyseret millioner af jobopslag for at finde svaret. Svaret er et rungende ja. Muligheden for at arbejde asynkront og på afstand driver simpelthen en massiv opgradering af, hvilke kompetencer der forventes af dig. Okay, lad os pakke det her ud. For hvis kravene bliver højere, må vi jo forstå hvorfor. Forfatterne lavede jo 37 dybdegående, kvalitative interviews med ledere og HR-folk for at finde ud af det. Præcis. De startede med at bygge en teori ud fra virkelige menneskers oplevelser. Og da jeg læste det her, tænkte jeg, det minder jo helt vildt om at bruge en dating-app. Altså i forhold til at møde en person på den lokale cafébar. Ha, okay. Hvordan det? Jo, tænk på det. På cafébaren er udvalget jo ekstremt lille. Det er bare dig og et par andre. Du kan nemt overse, at en person måske ikke er perfekt på papiret, fordi kemien simpelthen er der, ikke? Jo, man klikker bare, og så betyder baggrunden mindre. Nemlig. Men på en dating-app med 10.000 vis af muligheder, der begynder folk at filtrere stramt. De sorterer benhårdt på højde, uddannelse og indkomst. Er det ikke lidt det samme, der sker med jobansøgningerne? Det er faktisk en fantastisk analogi. For det, der er fascinerende her, er, at de interviews afslører 3 hovedmekanismer, og din app-analogi rammer lige ned i dem. Okay, hvad er den første mekanisme? Den første handler om udfordringer med oplæring og støtte, altså det, der skete med e-mailen i din historie før. Fjernarbejde er jo asynkront, så al den der uformelle læring forsvinder. Altså den der tavse viden ved kaffemaskinen. Præcis. Det er utroligt svært at bygge mentorskaber, når man ikke sidder i samme rum. Lederne føler, at de mister evnen til at forme kandidaten, så de vil simpelthen have folk, der allerede kan det hele. Vent lige lidt. Giver det overhovedet økonomisk mening? Kunne en leder et bare ansætte et billigt, ung talent, og så bruge et par timer ekstra på Zoom-oplæring? Det skulle man tro, men lederne siger simpelthen, at det er for drengene. Et 4 timers Zoom-opkald for at lære en ung op koster alt for meget mental energi i forhold til at have dem siddende ved siden af sig. Wow, okay, så friktionen er simpelthen for høj. Hvad med den næste mekanisme? Var det dating-appen? Ja, den enormt udvidede ansøgerpulje. Når de geografiske grænser forsvinder, får arbejdsgiverne jo pludselig 600 ansøgere i stedet for 30.
Og for ikke at drukne i CV'er, så hæver de bare barren fuldstændig. Lige præcis. De bruger de formelle trav som et grovfilter. Og den tredje mekanisme handler så om et skift mod det målbare. Altså fordi de ikke længere kan se folk arbejde fysisk. Nemlig, lederne kan jo ikke se dig sidde koncentreret en fredag eftermiddag. For at minimere risikoen for dovenskab, stoler de i højere grad på hårde færdigheder og CV-data i stedet for personlighed. Okay, de her 3 teorier lyder jo super logiske, men altså, og her er jeg lige nødt til at forholde mig kritisk. Hvordan ved vi, at vi ikke bare sammenligner æbler og pærer i det virkelige liv? Hvordan tænker du? Jo, altså en programmør, der koder hjemme i kælderen, kræver jo af natur flere komplekse færdigheder end en tjener på en restaurant, som skal være fysisk til stede. Hvordan kunne forskerne isolere selve effekten af at arbejde hjemmefra? Det er et virkelig godt spørgsmål, og det er her artiklen for alvor viser sine muskler. De brugte et gigantisk datasæt fra Lightcast med over 50 millioner jobopslag. 50 millioner? Wow! Ja, fra 28 forskellige EU-lande, hentet mellem 2018 og 2021. For at undgå dit æbler- og pæreproblem, brugte de modeller med fixed effects. Hvad betyder det på almindeligt dansk? Det betyder, at de statistisk set kun tillod deres computer at sammenligne det nøjagtigt samme job, slået op af den samme virksomhed i det samme land i det samme år. Men så de kiggede kun internt i den samme bank i for eksempel 2019? Præcis. Den eneste forskel mellem de 2 jobopslag var simpelthen, om HR havde sat kryds i feltet, kan udføres hjemmefra eller ej. Det er jo genialt. Men er der ikke en risiko for, at pandemien kluder i tallene? Jo, men forskerne udnyttede faktisk covid-19 som et naturligt eksperiment. De brugte en såkaldt instrumentalvariabel baseret på landenes social distanceringspolitikker. Så de rensede data for tilfældigheder ved at se på dem, der var tvunget hjem? Lige præcis. Og de inddrager også, hvor nemt de enkelte jobs teknisk set overhovedet også er udført digitalt. Det gjorde konklusionen utrolig stærk. Så når vi står med de her helt rene tal for 50 millioner opslag, det giver mig altså lidt et billede af at tage i IKEA, ikke? IKEA. Uddybt lige den. Jo, altså det er forskellen på at købe et samlet selskab, hvor du selv skal lægge tid og sved i det, versus at bestille et fattesamlet snedermøbel direkte til døren. Arbejdsgiverne orker ikke at samle medarbejderen selv længere. Det er spot on. De vil have snedermøblet. Når man sammenlignede de her identiske jobs i samme virksomhed, krævede fjernarbejdsversionen simpelthen 25% flere unikke færdigheder. 25%? Det er jo et massivt spring for at lave de præcis samme opgaver. Ja, og ikke nok med det. De krævede i gennemsnit også ekstra formel erhvervserfaring og oftere højere universitetsgrader. Man gad vide, om ikke det bare handler om at frasortere de unge, der mangler overvis af erfaring. Faktisk ikke. Der er en vild nuance her. Da forskerne statistisk set tog højde for kravet om flere specifikke færdigheder, så faldt forskellen i erfaringskravet med op til 40%. Altså, så virksomhederne er reelt mere interesserede i, hvad du kan, frem for hvor mange år du har siddet på en stol. Nemlig, de vil have dig, fordi du mestrer det specifikke regnskabssystem til fulde, og ikke fordi du har siddet på et kontor 5 år længere. Men hey, hvad så med lønnen? Man hører jo ofte den der med, at du får lov til at arbejde i nattøj og spare pendlertiden, så vi betaler dig lidt mindre. Falder lønnen? Det er en super almindelig myte, men data knuser den faktisk. Lønnen for de her fjernarbejdsjobs var rent faktisk en anelse højere, omkring 0,06 standardafvigelser højere. Det er alligevel overraskende. Ja, det viser jo, at virksomhederne ikke bare bruger de høje krav som et falsk filter, de betaler rent faktisk en præmie for at få fat i den ekstra ekspertise og selvstændighed. Okay, og her bliver det virkelig interessant. For hvis vi går tilbage til starten af vores samtale med de 3 teorier, hvilken af dem driver så egentlig chefernes adfærd? Hvis vi sætter det i et større perspektiv, så splittede forfatterne dataene op for at teste teorierne, og 2 af dem klarede sig fantastisk, mens en af dem fuldstændig faldt til jorden. Spændende. Hvad skete der med oplæringsteorien? Den står utrolig stærkt, for de jobtyper, der normalt kræver massiv, uformel sidemandsoplæring, der sprang kompetencekravet for fjernarbejdere op med over 35%. Wow! Så arbejdsgiverne nægtede simpelthen at påtage sig oplæringsbyrden på afstand. Præcis. Og hvad angår ansøger-pulje-teorien, altså dating-appen, den er også valid.
For jobs, der førhen lå online i månedsvis, fordi de var så svære at besætte, der så man en vanvittig stigning på 52% i kompetencekravene, da de blev gjort fjernbaseret. Gud ja, for nu åbnede sluserne sig for globale ansøgere, og så kunne arbejdsgiverne endelig tillade sig at være kredsende. Men vent, hvad var det for en teori, der faldt til jorden? Teorien om det målbare. At lederne ville være mistroiske og udelukkende kræve hårde data og KPI'er fra folk derhjemme. Gjorde de ikke det? Nej. Mod forventning viste teksterne, at arbejdsgiver ikke fokuserede mere på målbare færdigheder, og de brugte stadig fuldstændig lige så mange ord om virksomhedskultur og empati i opslagene for fjernarbejde. Så det handler slet ikke om mistillid eller mikromanagement. Det handler simpelthen bare om dyr oplæring og simpel udbud og efterspørgsel. Lige præcis. Det er super praktisk, men forskerne stoppede faktisk ikke der. For der er jo en svaghed ved at stole blindt på jobopslag. Ja, altså meget af det er jo skrevet af en eller anden HR-algoritme, der bare copy-paster fra sidste år, ikke? Nemlig, vi må vide, om rigtige mennesker, der sidder og ansætter lige nu, udviser den samme adfærd. Det er genialt. Heldigvis lavede forskerne et online-eksperiment for at teste præcis det, ikke? Jo, og det er her, du og lytter lige skal overveje dit eget bias. Hvis du selv skulle ansætte en kollega i dit team i morgen, vil du så ubevidst kræve meget mere af dem, hvis de sad i Italien i stedet for ved bordet ved siden af? Og for at finde ud af det, kørte de et eksperiment på platformen Prolific med rigtige ledere, ikke? Jo, 1.250 deltagere, som alle sammen havde ægte ansættelseserfaring. De gav dem en fiktiv, men meget realistisk sag om en tech-virksomhed, der skulle ansætte. Hvilke stillinger skulle de ansætte til? En data scientist, en marketinganalytiker og en sælger. Og her er tricket. Rollerne blev tilfældigt beskrevet fra deltagerne som enten on-site eller remote. Så de samme mennesker bedømte den samme stilling, og den eneste forskel var lokationen. Lige præcis. Og resultatet bekræftede fuldstændig dataene fra de 50 millioner jobopslag. Deltagerne krævede flere færdigheder for at lade folk arbejde hjemme. Konsekvent. Og der var en helt særlig detalje. Effekten var allerstørst for sælgere. Sælgere? Hvorfor lige dem? Fordi salg jo er en disciplin, du primært lærer ved at lytte til ældre kollegaer på telefonen og ved ligesom at mærke rummet, ikke? Gud ja, det er fuldstændig mesterlærer i praksis. Ja, og når den træningsmulighed fjernede sit remote setup, så gik lederne nærmest i panik. De krævede pludselig en færdigstøbt stjernesælger fra dag 1. Men krævede de så også fine universitetsgrader af dem? Nej, og det er det vigtige. Uddannelseskravene ændrede sig faktisk ikke væsentligt. Det indikerede et massivt fokus på, hvad man kan, snarere end hvad man har af papirer. Så hvad betyder alt dette egentlig for os i praksis? Lad os trække trådene lidt sammen. For akademikerne viser det her jo med al tydelighed, at arbejdsstruktur, altså om vi er fjernarbejder eller fysisk samlet, spiller en enorm rolle. Ja, det skal jo analyseres på lige fod med ny teknologi og automatisering, når vi vil forstå skiftene på arbejdsmarkedet. Helt enig. Og for praktikeren, især for dig, der lytter, som måske drømmer om at blive digital nomade og søge job hjemmefra. Ja, hvad er dummen til dem? Hvis du ønsker den store frihed ved fjernarbejde, så betaler du prisen i form af, at du skal uddanne dig selv. Virksomhederne vil simpelthen ikke længere være en skole for fjernarbejdere. De forventer snedkemøblet, den helt færdige pakke. Lige præcis. Og det rejser faktisk et ret vigtigt spørgsmål for fremtiden. Hvordan ser fremtiden ud for de unge, der lige er trådt ind på arbejdsmarkedet? Ja, historisk set var kontoret jo ikke bare en produktionsfabrik. Det var et sted for mesterlærer og overlevering af kultur. Netop. Og hvis vi nu bevæger os ind i et system, hvor alle seniorerne med erfaring får lov at arbejde hjemmefra, fordi de allerede har kompetencerne. Og virksomhederne samtidig nægter at ansætte de uerfarne fjernarbejdere, fordi de ikke føler, de kan oplære dem digitalt. Ja, skaber vi så utilsigtet et totalt tabt årti for den næste generation af arbejdere? Er vores konstante jagt på geografisk fleksibilitet i virkeligheden ved at ødelægge selve den sociale kontrakt om at oplære fremtidens talent? Det er en utrolig stærk refleksion at tage med sig.